ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णौ नारायणौ वन्दे कृष्णौ वन्दे व्रजप्रियौ कृष्णौ दैपायनौ वन्दे कृष्णौ वन्दे पृथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रविजन्तमनपेतमपेतकृत्यं दैपायनो विरहकातरया जुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महात्म्ये अथ चतुर्थ अध्याय पाठ। सूतोवाच अथ वैष्णवचेतेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सलः वनमाली घनश्यामः पीतवासमनोहरः काञ्चीकलापरुचिरोलसनमुकुटकुण्डलः श्रीभङ्गलिललितचारुकौस्तुभेन विराजितो कोटिमन्मथलावण्यो हरिचन्दनचर्चितो परमानन्दचन्द्रमूर्तिमधुरो मुरलीधरः आविवेशो स्वभक्तानां हृदयान्यवदानि च वैकुण्ठवासनो ये च वैष्णवा उद्धवादयो तत्कथाश्रवणार्थं ते गौररूपेण संस्थितम्। तया जय जया रामो रसपुष्टि लौकिकी चूर्णप्रशूनवृष्टिश्च मुहुः शङ्खरवोऽप्यभूतः तत्सभा संस्थितानां च देहगेहात्मविस्मृतिः दृष्ट्वा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यं ब्रवीत अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वरः सप्ताहजन्योऽधविलोकितो मया मूढा सठाये पशुपक्षिणोऽत्र सर्वेऽपि निशिपापतिमा भवन्ति अतो निलोके ननु नास्ति किञ्चित् चेतस्य शोधाय कलौ पवित्रम् अघोरविध्वंसकरं तथैव कथा समाना भुवि नास्ति चान्यत् के विशुद्ध्यां ते वदन्तु मह्यं सप्ताहयज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितौ विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीनमार्गः। कुमारावचुः ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गः क्रोधाग्निदग्धः कुटिला च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते सत्येन हीना पितृमातृदूषका तृष्णाकुलश्चाश्रमधर्मवर्जितः येनाम्बिका वा शरणोऽपि हिंसकः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते पञ्चोग्रपापाच्छलच्छद्विकारिणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दया च मे ब्रह्मसपुष्टा व्यभिचारिकारिणः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते कायेन वाचा मनसापि पातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति सठाहतेन ये परसपुष्टा मलिना दुराशया सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते अत्र ते कीर्तयिष्यामो इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते तुङ्गभद्रातटे पूर्वं भूतपतनमुत्तमं
यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्यसतकर्म तत्परा आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेदविशारद सोऽत स्मार्ते सुनिष्णातो द्वितीय एव भास्कर वीक्षको वेत्तवान् लोके तत्प्रिया धुन्धलिस्मता सौवाक्ये स्थापिका नेत्थं सुन्दरी शकलोद्भव लोकवार्तारता क्रूर प्रायसो बहुजर्पिका शूरा च गृहकृतेषु कृपणा कलह प्रिय एवं निवसतो प्रेम्णा दम्पत्यो रममाणयो अर्थः कामस्तयोरासन् सुखाय गृहादिकम् पश्चाद्धर्मः समारब्धस्ताभ्यां सन्तानहेतवे गोभूहिरण्यवासांसि दीनेभ्यो यच्छता सदा धनार्धौ धर्ममार्गेण ताभ्यां नीतं तथापि च न पुत्रो नापि वा पुत्री ततः चिन्तातुरो भृशम् एकदशादियो दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गता मध्याह्ने तृषतो जातः तडागं समुपेयिवान् पीत्वा जलं निषण्णस्तु पिजा दुःखेन कर्षितो मूर्तादपतत्रैव सन्न्यासी कच्चिदागतो दृष्ट्वा पीतजलं तं तु विप्रो यातस्तदन्तिकं नत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वासं संस्थिता पुरा यतिरुवाच कथं रोदस विप्रत्वं तात चिन्तावलीयसि वदतं सत्तरं मह्यं स दुःखस्य कारणं ब्राह्मणोवाच किं ब्रवीमीर्षे दुःखं पूर्वपापेन सञ्चितं मदीयः पूर्वजास्तोऽयं कवोष्णामुपभुञ्जते मद्रत्नं नैव गृह्णन्ति प्रीत्यादेवधिजातय पिजा दुःखेन शून्योऽहं प्राणस्तक्तुमिहागत धिग्जीवितं प्रजाहीनं धिग्रहं चापि जाम्बिनो धिग्धनं चानपत्यस्य दिक्वलं सन्ततिविनं पाल्यते या मया धेनु सा वन्द्या सर्वथा भवेत् यो मया रोपितो वृक्षः सोऽपि बन्धत्वमाश्रयेत् यत्फलं मद्गृहायातं तच्च शीघ्रं विनश्यति निर्भाग्य यस्यानपत्यस्य किमतो जीवते न मे इदुक्ता सर्वरोधोच्चैस्तत्पा सर्वं दुःखपीडितो तदा तस्य यतश्चेत्ते कर्णाभूदगर्यसि तद्भालाचर्यमालां च वाचयामाश योगवान् सर्वं ज्ञात्वा यति पश्चात् विप्रमुचे सविस्तरं यतिर्वाच मुञ्च ज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकं तु समासाध्य तज संसारवासिनां शृणु विप्र मया तेद्य प्रारब्धं तु विलोकितं सप्तजन्मावधि तव पुत्रो नैव च संतते सगरो दुःख मवापाङ्गा पुरा तथा रे मुञ्चाध कुटुम्बाशां सन्न्यासे सर्वथा सुखं ब्राह्मणोवाच केन भवेत् किं मे पुत्रं देहि बलादपि नो चेत् यजाम्यहं प्राणस्त्वदग्रे शोकमूर्छितो पुत्राद् सुखहीनोऽयं सन्न्यासः शुष्क एव हि ग्रस्तः सरसो लोके पुत्रपौत्रसमन्वितः इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्राब्रवीर्षतपोधन चित्रकेतुर्गता कष्टं विधिलेखविमार्जना नायास्यसि सुखं पुत्र तथा देवहतोद्यमो अतो घटेन युक्तोऽसि नाट्यनं किं वदाम्यहम् तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं स दत्तवान् इदं भक्षय पत्न्या त्वं तथा पुत्रो भविष्यति सत्यं शौचं दयादानं मेकभक्तं तु भोजनं वर्षावधि स्त्रिया कार्यो तेन पुत्रोऽति निर्मला एवमुक्ता ययौ योगी विप्रस्तु गृहमागतो पत्न्यः प्राणौ फलं दत्त्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचितो तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे चरुरोदः अहो चिन्ता ममुत्पन्ना फलं चाहं न वक्षये फलवक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदरवर्धिता स्वल्पवक्षं ततो शक्तिर्गृहकार्यं कथं भवेत् देवाद्घटी विजितग्रामे पलायेद गर्भिणी कथं
सुको वन्यवसेदगर्भस्थं कोच्छे कथमुत सजेतो त्रियक चेदागतो गर्भस्तदा मे मरणं भवेत् पशुतौ तारुणौ दुःखं सुकुमारी कथं सहे मन्दाया मयि सर्वस्वं ननन्दा सहरे तदा सत्यशौचादिनियमो दुराराध्य सदस्यते लालने पालने दुःखं पशुताया च वर्तते बन्ध्या वा विधिवा नारी सुखनी चेत मे मतिः एवं कुतर्कयोगेन तत्फलं नैव वचितं पत्या पृष्टं फलं भोक्तं चेत तयेरितम् एकदा भगनी तस्यात् तद्ग्रहं स्वेच्छया गतं तदग्रे कथितं सर्वं चिन्तयं महती मे दुर्बला तेन दुःखेन व्यानुजे कर्वाण किं श्राव्रवीन् मम गर्भोऽस्ति तं दास्यामि प्रसूतितः सा तावत्कालं सगर्भेव गोप्ता तिष्ठगृहे सुखं वेत्तं त्वं मत पतेर्यच्छ सते दास्यति बालकं सानमास्कतो मितो बाल इति लोको वदिष्यति तं बालं पोषयिष्यामि नित्यमागच्छते गृहे फलमर्पयधीन वै त्वं परीक्षार्थं तु साम्प्रतं तत्तदाचरितं सर्वं तथैव स्त्रीस्वभावतो अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकं तदा आनीय जानको बालं रहस्ये धुन्दली दतौ तया च कथितं भर्त्रे प्रसूता सुखमर्भक लोकस्य सुखमुत्पन्नौ मात्मदेव प्रचोदयात् ददौ दानं द्विजातेभ्यो जातकर्म विधाय च गीतवादित्र घोषोऽभूत् तद्वारे मङ्गलं बहु भर्तुरग्रे विविधवाक्यं तन्नं नास्ति कुचे मम अन्यस्तन्नेन निर्दुग्धा कथं पुष्णामि बालकं मतः स्वशुच्च प्रसूताया मृतो बालस्तु वर्तते तामकार्य गृहेरच्च सातिर्वं पोषयिष्यति पतिना तत्कृतं सर्वं रक्षणहेतवे पुत्रस्य धुन्धकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितं त्रिमासे निर्गते चाथ सधेनु सुसुविर्वकं सर्वाङ्गसुन्दरं दिव्यं निर्मलं कनकप्रभं दृष्टा प्रसन्नो विप्रस्तो संस्कारं स्वमादधे मत्वाश्चर्यं जनः सर्वे दिदर्शार्थं समागतो भाग्योदयो धुना जातो आत्मदेवस्य पश्यतो धेन्मावाला प्रसूतस्तु देवरूपीत कौतुकं न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापि विदयो गोकर्णतं सुतं दृष्ट्वा गोकर्णं नाम चाकरो कियत्कालेन तौ जातौ तरणौ तनया बुभौ गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुन्धकारी महाखल स्नानशौचक्रियाहीनो दुर्वची क्रोधवर्धितो दुष्परिग्रहकर्ता चो स्वहस्तेन भोजनं चोर सर्वजनद्वेषी परवेश्म प्रदीपको लालनायार्वकां धृत्वा श्रद्धकूपेन पातयत् हिंसक शस्त्रधारी चो दीनां धानां प्रपीडक चाण्डालाभिरतो नेतं पाशहस्तसंगतो तेन वेश्याकुशङ्गेन पेत्रं वेत्रं तु नाशितं एकदा पितरौ ताड्य पात्राणि स्वयमाहरत् तत्पिता कृपणः पोच्चै धनहीनो रुरोधः बन्धत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायक क्वा तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणात् त्यजामि दुःखेन अकष्ट मम संस्थितं तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञानसंयुत बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन् असारः खलु संसारो दुःखरूपी विमोहक सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान् ज्वलते निशम् चेन्द्रस्य सुखं किञ्चिन्न सुखं चक्रवर्तिन सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तजीवन मुञ्च ज्ञानं प्रजारूपं मोहतो नरके गतिः निवते सति देहोऽयं
सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज तद्वाक्यं तु समाकर्ण्य गन्तुकामा पिता ब्रवीत् किं कर्तव्यं वने तात तत्त्वं वद सविस्तरम् अन्धकूपे स्नेहपाशे बद्धा पङ्गुरुहं सठ कर्मिणो पततो नूनं मामोद्धर दयानिधे गोकर्णवाच देहे हस्ते मा स्वधरे अभिमतिं त्यजतो जाया सुतादिषु सदा मम चाविमुञ्चो पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यराग्यरसिको भवभक्तनिष्ठ धर्मो भजस्व सत्यतो त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमासु भुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितिरां पिबत्वम् एवं सुतोक्तिवसितो विग्रहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिर्गतिषष्टिवर्षो युक्तो हरिरनुदिनौ परिचर्ययासौ श्रीकृष्णमापनेतो दशमस्य पाठात्। ओम शशि पद पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये व्यप्रमोचो नाम चतुर्थ अध्याय पाठफल श्री कृष्ण चरणारविंदम अर्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अथ पंचमो अध्याय सूतोवाच पितरिर्परते तेन जननी ताडिताभ्रशं कावेत्तं तिष्ठति ब्रूहि हनिशेलत्तयना चेत् इति तद्वाक्यसन्त्रासात् जनन्या पुत्रदुःखता कूपे पाता कतो रात्रौ तेन सा निधनं गता गोकर्णस्तीर्थयात्रार्थं निर्गतो योगसंस्थितः न दुःखं न सुखं तस्य न वैरी नापि बान्धवो धुन्धकारी गृहे तिष्ठत् पञ्चपन्नवधूव्रत अत्युग्रकर्मकर्ता च तत्पोषण विमूढधि एकदा कुलटास्तास्तु भूषणान् विलिप्सव तदर्थं निर्गतो गेहात् कामान्धो मृत्युमस्मरन् यतस्ततश्च संहत्य वेत्तं विश्वा पुनर्गत ताभ्यो यच्छत् स्ववस्त्राणि भूषणानि कियन्ति च बहुवित्त च यं दृष्ट्वा रात्रौ नार्यविचारयन् चौर्यं करोत्तसौ नित्य मतो राजा गृहीष्यति वेत्रं हृत्वा पुनश्चैनं मारयिष्यत निश्चितम् अतो अर्थगुप्तये गूढो मस्माभिः किं न हन्यते निहन्तेनं गृहीत्वार्थं यास्यामो यत्र कुत्रचित् इति तानिश्चयं कृत्वा सोप्तं सम्बद्ध रश्मभिः पाशं कण्ठे निधायस्य तन्मृत्युमुपचक्रम तर्तं नाम महारासौ चिन्तायुक्तस्तदा भवन् तप्ताङ्गारसमूहाश्च तन्मुखे हि विचिच्यपो अग्निज्वालात् दुःखेन व्याकुलो निधनं गता तं देहमवचुरगर्ते प्रायो साहसिकस्त्रियो न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनपीदं तथैव च लोकै पृष्ठा वदन्ति स्म दूरं यात प्रियो हि न आगमिष्यति वर्षेऽस्मिन् वित्तलोभविकर्षितो स्त्रीणां नेतु विश्वासं दुष्टानां कारयिद्बुधो विश्वासे यस्थितो मूढ साधुखै परभूयते सुधामयं वचो यासां कामिनां रसवर्धनं हृदयं चोरधाराभं प्रेको नाम योषितं संहृत्य वेत्तं तायात कुलटावहुभर्तिक
धुन्धकारी बभूवथ महान प्रेतः कुकर्मत भृत्यारूपधरो नित्यं धावं दश दिशोत्तरं सीता तव परिक्लिष्टो निराहारा पिपासितो न लेभे शरणं क्वापि हा देवेत मुहुर्वदन् कियत् कालेन गोकर्णो मृतं लोकादबुध्यत अनाथं तं विदित्वेवो गया श्राद्धमचीकरत् यस्मिंस्तीर्थे तु संयाति तत्र श्राद्धमवर्तयत् एवं भ्रमंश गोकर्ण स्वापुरं समुपेयिमान् रात्रौ गृहाङ्गणे सप्तु मागतोऽलच्चिता परै तत्र सप्तं सविज्ञाय द्वन्द्वकारी स्वबान्धवं निशीथे दर्शयामास महारौद्रतरं वप शकनमेषास्रकृदस्ति सकच्च महिषो भवत् सकृदिन्द्र सकृचाग्नि पुनश्च पुरुषो भवत् विपरीत्यामिदं दृष्ट्वा गोकर्णो धैर्यसंयुत अयं दुर्गात्यकः कोऽपि निचित्यातो तं ब्रवीतो गोकर्णोवाच कस्त्वमुग्रतरो रात्रौ कुतो यातो दशामिमां किं वा प्रेता पिशाचो वा राक्षसोषितशंसन सूतवाचो एवं पृष्टस्तदा तेन रुरोधोच्चै पुनः पुनः अशक्तो वचनोच्चारे शक्यमात्रं चकारः तदोज्जलौ जलं कृत्वा गोकर्णस्तद्मुदीरयत् तदसेकहत पापोऽसौ प्रभक्तोमपचक्रमे प्रेतोवाच अहं भ्राता तदीयोऽस्मि धुन्धकारीतनामत स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया कर्मणो नाशसंख्यामे महाज्ञाने विवर्तना लोकानां हिंसकासोऽहं स्त्रीभिर्दुःखेन मारितो अथ प्रेतत्वमापन्नो दुर्दशं च वहाम्यहं वाताहारेण जीवामि देवाधीनफलोदयात् अहो बन्धो कृपासिन्धो भ्रातर्मामासु मोचय गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यमथाब्रवीत् गोकर्णवाच तदर्थं तु गया पिण्डो मया दत्तो विधानत तद्गतं नैव मुक्तोऽसि ममाचर्यमिदं महत् गया श्राद्धान्मुक्तिश्चेदुपायो न परस्पृहो किं विधेयं मया प्रेत तत्त्वं वद सविस्तरं प्रेतोवाच गया श्राद्धो सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायोमपरं कञ्चित् त्वं विचारय साम्प्रतम् इति तद्वाक्यमाकर्ण्य गोकर्णो विस्मयं गतः सतसाध्रेण मुक्तिश्चेत् साध्यमोचनं तव इदानीं तु निजं स्थानो मा तिष्ठ प्रेतनिर्भयो तन्मुक्तिसाधकं किञ्चित् विचार च धुन्धकारी निजस्थानं तेनादिष्टस्ततो गतः गोकर्णश्चिन्तयामास तां रात्रिं न तदद्यगात् प्रातस्तमागतं दृष्ट्वा लोकाप्रीत्य समागतो तत्सर्वं कथितं तेन यज्जातं च यथा निशि वेद्वांसयोगनिष्ठा च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिना तन्मुक्तिनेव ते पश्यन्तः शास्त्रसञ्चयान् तथा सर्वे सूर्यवाक्यं तन्मुक्तौ स्थापितं परं गोकर्णस्तम्भनं चक्रे शूरविज्ञस्य वै तदा त्वभ्यं नमो जगत्साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्तहेतुकं तच्छ्रुत्वा दुर्तः सूर्यो स्फुटमित्यभ्यभाषतो श्रीमद्भागवतान्मुक्ति सप्ताहं वाचनं करो यदि सूर्यवचः सर्वैर्धर्मरूपं तु विश्रुतं सर्वे ब्रुवन्ः प्रयत्नेन कर्तव्यं सुकरं तिदं गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनार्थं प्रवर्तितो तत्र श्रवणार्थाय देशग्रामजनाययो संबन्धः वृद्धमन्दाश्च तेऽपि पापक्षयाय भगवन्धो वृद्धमन्दाश्च तेऽपि पापक्षयाय वै समाजस्तु महान् जातो देवविस्मयकारक यदैवासनमास्थाय गोकर्णो कथयत कथां सा प्रेतोऽपि तदायात स्थानं पश्यन्नितस्तत सप्तग्रन्थियुतं तत्र पश्यत् कीचकमुच्यतं तन्मूलच्छिद्रमाविश्य श्रवणार्थं ततो ह्यसौ
वातरूपेस्ततं कर्तुं शक्तो वंशमाभीशतो वैष्णवं ब्राह्मणं मोक्ष्यं श्रोत्रारं परिकल्प्यशो प्रथम स्कन्दतः स्पष्टो माख्यानं धेनजो करोत् दिनान्ते रचिता गाथा तदा चित्रं बभूवः वंशैका कथि ग्रन्थभेदो भूतशब्दं पश्यतां सतां द्वितीयहिनी तथा सायं द्वितीयगन्तभेदनं तृतीयहिनी तथा सायं तृतीयगन्तभेदनम् एवं सप्तदिनश्चैव सप्तग्रन्थि वेदनं कृत्वा सदास्कन्दो श्रवणात्पेततां जहो दिव्यरूपधरो जात पुष्पला दिव्यरूपधरो जात तुलसीदाममण्डित प्रीतवासा घनश्यामो मकटे कुण्डलान्वितो न नाम भ्रातरं सद्यो गोकर्णमिति च ब्रवीत् त्वयाहं मोचितो बन्धो कृपया प्रेतकस्मलात् धन्या भागवती वार्ता प्रेतपीडाविनाशनी सप्ताहोऽपि तथा धन्यो कृष्णलोको फलप्रद कम्पन्ते सर्वपापानि सप्ताहश्रवणेस्ते अस्माकं प्रलयं सद्यो कथा चेयं करिष्यति आर्द्रं शुष्कं लघुस्थूलं वामनाकर्मभिकृतं श्रवणं विदहित पापं पावका समिधो यथा अस्मिन् वै भारते वर्षे सुरभिर्देव संसदि आकथा श्रावणां पुंसां निष्फलं जन्म कीर्तितं किं मोहतो रच्यतेन स्वपुष्टेन बलीयस आध्रुवेण शरीरेण सुखशास्त्रकथां विना अस्थिस्तम्भं स्नायुबद्धं मासशोणितलेपितं चर्मावनद्धं दुर्गन्धं पात्रमूत्रपुरीशयो जराशोकाविपाकार्तं रोगमन्दिरमातरं दुष्पूरं दुर्धरं दुष्टं सदोषं क्षणभङ्गुरं कमेविडभस्म संज्ञातं शरीरमितवर्णितम् अस्तिरेण स्तरं कर्म कुतोऽयं साधयेन्न हि यद् प्रातः संस्कृतं चर्णं सायं तच्च विनश्यति तदीयरससम्पुष्टे कायिका नाम नित्यया सप्ताह श्रवणालोके प्राप्यते निकटे हरि अतो दोषनिवृत्त्यर्थो मेतदेव हि साधनं बुद्बुदा इव तो एषु मशका इव जन्तसु जायन्ते मरणा एव कथा श्रवणवर्जितो जडस्य शुष्कवंशस्य यत्र ग्रन्थि विवेदनं क्षेत्रं किमु तदा चेत्तो ग्रन्थभेद कथाश्रवात् विद्यते हृदयागन्ते छिदन्ते सर्वसंशय क्षीयन्ते च सकर्माणि सप्ताह श्रवणेक्यते संसारकर्दमालेपो प्रेक्षालन पटीयसि कथातीर्थे स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुधस्मृत एवं ब्रुवत वै तस्मिन् विमानो मागमत्तदा वैकुण्ठवासभिर्युक्तं विस्फुरादीप्तमण्डलं सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानं धुन्धलीसुतः विमाने वैष्णवान्वीक्षो गोकर्णो वाक्यं ब्रवीतो गोकर्णवाच अत्रैव वयवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनितानि विमानानि न तेषां युगपत्कृतो श्रवणं समभागेन सर्वेषां हि दर्श्यते फलभेदा कुतो जातो प्रब्रुवन्तु हरिप्रिय हरिदास उचुः श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वेण तथा मननं कृतं फलभेदस्ततो जातो भजनादपि मानद सप्तरात्रमपौषेव प्रीतेन श्रवणं कृतं मननादि तथा तेन सरचित्ते कृतं वृषम् आदृढं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो हि हतो मन्त्रो भ्रग्रचित्रो हतो जप आवैष्णवो हतो देशो हतं श्राद्धमपात्रकौ हतमश्रोत्र्यहेदानो मनाचारं हतं कुलं विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्वभावेन मनोदोषो जयश्चैवो कथायां निश्चलामति एवमादिकृतं चेत् स्यात् तदा वैष्णवणे फलं पुनः श्रवान्ते सर्वेषां वैकुण्ठे वसति ध्रुवं गोकर्ण तव गोविन्दो गोलोकं दास्यति स्वयं
एवमुक्ता ययो सर्वे वैकुण्ठं हरकीर्तन श्रावणे मासे गोकर्ण कथामुचे तथा पुनः सप्तरात्रवतीं भूय श्रवणं तै कुतः पुनः कथा समाप्तौ यज्जातं श्रूयतां तच्च नारद विमानैः सह भक्ते च हरिराविर्बभूवः जय शब्द नमः शब्द तत्रासन बहवस्तदा पाञ्चजन्यधनिं चक्रे हर्ष तत्र स्वयं हरि गोकर्ण तु समालिङ्गो याक करोत स्वसदसं हरि श्रोत्र नन्यान् घनश्यामन् पीतकोशे अवाशसो किरीटना कुण्डलतथा चक्रे हरिक्षणात् तदग्रामे ये स्थिता जीवो आस्वचाण्डालजातयो विमाने स्थापितास्तेऽपि गोकर्ण कृपया तदा प्रेषिता हरलोके ते यत्र गच्छन्त योगिना गोकर्णेन स गोपालो गोलोकं गोपवल्लभं कथाश्रवणतः प्रीतो निर्ययौ भक्तवत्सल अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगदुर्लभं यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गति कदा तं लोकं हि गतास्ते तु श्रीमद्भागवता श्रवन् भ्रूमोऽत्र ते किं फलव्रान्दमुज्ज्वलं सप्ताहयज्ञेन कथा सुसञ्चितं करणेन गोकर्णकथाक्षरो यै पीतच्यते गर्भगता न भूय वातामुपर्णासन देहशोषणैस्तपो विरोग्रे चिरकाल संचितै योगे च संयान्ति नतां गतिं वै सप्ताहगाथा श्रवणेन यान्तयाम् इतिहासमिमं पुण्यं साण्डिल्योऽपि मुनीश्वर पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानन्दपरिप्लुत आख्यानमेतत् परिमं पवित्रं श्रुतं सकृद्वै विदहेदघोगं श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमावहेत् नित्यं सुपाठाद पुनर्भवं च। ओ षष्ठी श्रीपद पुराण उत्तराखंड श्रीमद्भागवत महात्म्ये गोकर्ण मोचवर्णम नाम पंचम अध्याय पाठो श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अथ षष्ठोऽध्याय कुमाराचुः अत ते सम्प्रवेक्षाम सप्ताह श्रवणे विधे सहायैर्वसुभिश्चैव प्रायः साध्यो विधिस्मृतः देवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं प्रच्छययत्नत विवाहे यादृशं वेत्तं तादृशं परिकल्पये नवश अश्वनोर्जौ च मार्गशीर्ष शुचिर्नभो एते मासाः कथारम्भे श्रोतॄणामोच्च सूचक मासानां विप्रहेयानि तान् त्याज्यानि सर्वथा सहायचेतरे तत्र कर्तव्याशोद्यमाचये देशे देशे तथा सेयं वार्ता प्रेष्या प्रयत्नतः भविष्यति कथा चात्र आगतव्यं कुटुम्बभिः दूरे हरिकथा केचित् दूरे चाच्युतकीर्तन स्त्रियः शूद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत् देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवा कीर्तनोत्सुक तेषुैव पुत्रं प्रेष्यं च तल्लेखनमिति रतं सतां समाजो भविता
सप्तरातौ सुदुर्लभो अपूर्वो रसरूपेव कथा चात्रो भविष्यति श्रीभागवत पीयूषो पानाय रसलम्पट तच्च तथा शीघ्रो मायातो प्रेम तत्पर न विकासा कदाचिच्चेत् दिनमात्रं तथापितु सर्वथा आगमनं कार्यं क्षणोत्रेव सुदुर्लभ एवमाकारणं तेषां कर्तव्यं विनयेन च आगन्तुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पयेत् तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतं विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तद्कथास्थलं शोधनं मार्जनं भूमिर्लेपनं धातुमण्डनं गृहोपस्करमुद्धृत्य गृहकोणे निवेशयेत् अर्वाक् पञ्चाहतो यत्नादास्तीर्णानि प्रमेलयेत् कर्तव्यो मण्डपप्रोच्चै कदलीखण्डमण्डित फलपुष्पोदलैर्विश्वं वितानेन विराजितो चतुर्दिक्षुध्वजारोपो बहुसम्पद्विराजितो उदरवं सप्तेवलोकश्च कल्पनीया सविस्तरं तेषु विप्राविरक्तश्च स्थापनीया प्रबोध्य च पूर्वं तेषामाशनानि कर्तव्यानि यथोत्तरं भक्तोश्चापि तदा दिव्यो वासनौ परिकल्पयेत् उदन्मुखो भवेद्भक्ता श्रोत्रा वै प्राण्मुखस्तदा प्राण्मुखश्चेद् वेदवक्ता श्रोता चोदन्मुखस्तदा अथवा पूर्वद दिग्गेया पूजकमध्यता श्रोतृणामागमे प्रोक्ता देशकालादिको विदै विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्रविशुद्धीकत दृष्टान्तकुशलो धीरो वक्ता कार्योत निःस्पृह अनेको धर्मविभ्रान्त श्रेणः पाखण्डवादिनः सुखशास्त्रकथोच्चारे त्याजास्ते यदपन्यत वक्तुपा सर्वे सहायार्थो मन्ना स्थाप्यस्तथा विदुः पण्डिता संशयच्छेत लोकबोधन तत्पर वक्त्रा छोरं प्रकर्तव्यं दिनादरवाग्वृताप्तये अरुणोदये सौ निर्वत्य शौचं स्नानं समाचरेत् नित्यं संक्षेपतः कृत्वा सन्ध्यादं स्वं प्रयत्नतः कथा विघ्नो विघाताय गणनाथं प्रपूजयेत् पितरं सन्त्रप्य शुद्ध्यर्थं प्रायश्चित्तं समाचरेत् मण्डलं च प्रकर्तव्यं तत्र स्थाप्यो हरिस्तथा कृष्णमुद्दिश्य मन्त्रेण चरेत पूजाविधिं क्रमात् प्रदक्षिणा नमस्कारान् पूजां ते स्तुतिमाचरेत् संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्ममोहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात् श्रीमद्भागवतस्यापि तथा पूजा प्रयत्नतः कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूपदीपो समन्वितो ततस्तु श्रीफलं धृत्वा नमस्कारं समाचरेत् स्तुति प्रसन्नचित्तेन कर्तव्या केवलं तदा श्रीमद्भागवताख्योऽयं कृतप्रत्यक्षः कृष्ण एव हि श्रीकृतो श्रीमया नाथो भोक्तार्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव एवं दीनवचा प्रोच्यो भक्तारं चाथ पूजयेत् सम्भूषवस्त्रभूषाभिः पूजां ते तं च संस्तवेत् स्वकरूपा प्रबोधज्ञो सर्वशास्त्रविशारद एतत्कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानं विनाशय तदग्रे नियमः पश्चात् कर्तव्या श्रेयसे मुदा सप्तरात्रं यथाशक्त्या धारणीया स एव हि वर्णौ पञ्चमे प्राणां कथाभङ्ग निवर्तये कर्तव्यं तर्हरि जाप्यं द्वादशाक्षरविद्यया ब्राह्मणान् वैष्णवाचार्यास् तथा कीर्तनकारिण नत्वा सम्पूज्य दत्ताज्ञो स्वयमासनमाविशेत् लोकावित्तधनागार पुत्रचिन्ताभ्युदस्य च कथाचित्तो शुद्धमतिः सा लभेत् फलमुत्तमम् आसूर्योदयमारभ्य सार्धत्रिप्रहरान्तकं वाचनीया कथा सम्यक् धीरकण्ठं सुधीमत कथाविरामः कर्तव्यो मध्याह्ने घटिकाद्वयं
तत्कथामनुकार्यं वै कीर्तनं वैष्णवस्तदा मलमूत्रोजयार्थं हि लघ्वाहारा सुखावह हविष्यान्नेन कर्तव्यो योगभारं कथार्थिन पोष सप्तरात्रं वै शक्ति चेक्षणुयात्तद गतपानं पयोपानं कृत्वा वै शृणुयात् सुखं फलाहारेण वा भाव्यो मेघभुक्तेन वा पुनः सुखसाध्यं भवेद्यत्यो कर्तव्यं श्रवणाय तत् भोजनं तु वरं मन्ये कथाश्रवणकारकं नोपवासो वरः प्रोक्तो कथा विघ्नकरो यदि सप्ताहव्रतनां पुंसां नेमाचनु नारद विष्णुदीक्षा विहीनानां नादिकारा कथाश्रवे ब्रह्मचर्यामदसप्ति पत्रवल्यां च भोजनं कथा समाप्तो भोक्तिं च कुर्या नित्यं कथाव्रति शीतलं वधुतैलं च गरिष्ठानं तथैव च भावदुष्टं पर्यूषितं जह्यान् नित्यं कथाव्रति कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च दम्भं मोहं तथा द्वेषं दूर एच कथाव्रति वेदवैष्णव विप्राणां गुरुगोव्रतीनां तथा श्रीराजमहतां निन्दां वर्ज एज कथाव्रति सो रजस्वलान् त्यजामलेच्छ पतिता भ्रातृकेस्तथा द्विजा दृढवेदवाहोश्यो नावदेद्य कथाव्रति सत्यं शोचं दयामोनो मार्जवं विनयं तथा उदारमानसं तद्वद् देवं कुर्यात् कथाव्रति हरिद्रश्च क्षयरोगी निर्भाग्य पाप कर्मवान् अनपत्यो मोक्षकाम शृणुयात् च कथामिमाम् अपुष्पाकाकवन्ध्या च वन्द्याया च मृतार्पको श्रवदगर्भा च या नारी तया श्राव्य प्रयत्नतः एतेषु विधनाश्रावे तदच्चतरं भवेत् अत्युत्तमा कथा दिव्य कोटियज्ञ फलप्रदा एवं कृत्वा व्रतविधि बोध्यापनमथाचरेत् जन्माष्टमी व्रतमिवो कर्तव्यं फलकाञ्चभि आकिञ्चनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापनाग्रह श्रवणेनैव पूतास्ते निष्कामा वैष्णवायत एवं नगाः यज्ञेऽस्मिन् समाप्ते श्रोत्रवेस्तदा पुस्तकस्य च भक्तोश्च पूजाकार्याति भक्तितः प्रसाद तुलसीमाला श्रोत्राभ्यास मृदङ्गताललतं कर्तव्यं कीर्तनं ततो जय शब्दं नमः शब्दं शङ्खशब्दं च कारयेत् विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तमन्नं च दीयतां विरक्तः चेत् भवेच्छोता गीतावाच्यपरेहनि गृहस्थश्चेतदाहुमो कर्तव्या कर्मशान्तये प्रतिश्लोकं तु जुहुयात् विधिना दर्शमस्य च पायसं मधुसरपिश्च तिलाननादिकसंयुतम् अथवा हवनौ कुर्यात् गायत्र्या सुसमाहित तन्मयत्वात् पुराणस्य परमस्य च तत्त्वतो होमशक्तो बुधो होम्यं दद्यात् तत्फलसिद्धये नानाच्छिद्रनिरोधार्थं न्यूनताधिकतानयो दोषयो प्रशमार्थं च पठेनाम सहस्रकं तेन स्यात् सफलं सर्वं नाशत्यस्मादधिकं यत द्वादशं ब्राह्मणान् पश्चात् भोजयेन मधुपायसै दधातौ सुवर्णौ धेनौ चावृतपूर्णत्वहेतवे शक्तौ फलत्रयमितौ स्वर्णसिंहं विधाय च तत्राशपुस्तकं स्थाप्यं लिखितं ललिताक्षरं सम्पूज्यावाहनाद्यस्तदुपचारै सदक्षिणौ वस्त्रभूषणगन्ध्यादै पूजिताय यतात्मने आचार्याय सुधीर्दत्वा मुक्तः सद्भगवन्ननै एवं कृते विधाने च सर्वपापो निवारणे फलदं सत्पुराणं तु श्रीमद्भागवतं शुभं धर्मिकामार्थमोक्षाणां साधनं स्यान्न संशय कुमारावचुः इति ते कथितं सर्वं किं भूय श्रोतुमिच्छसि श्रीमद्भगवतेनैव भुक्तिमुक्तिकरैस्तते श्रुतोवाच इत्युक्त्वा ते महात्मानः प्रोचुर्भागवतीं कथां सर्वपापहरां पुण्यां भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीं शृण्वतां सर्वभूतानां सप्ताहं नियतात्मनां यथाविधि ततो देवं
तुष्टभूपुरुषोत्तमं तदन्ते ज्ञानवैराग्यो भक्तिना पोष्ठता पर तारुण्यं परमं चाभूत् सर्वभूतमनोहरं नारदश्च कृतार्थो भूतसिद्धे स्वे मनोरथे पुलकीकृत सर्वांगो परमानंद संभृत एवं कथां समाकर्ण्यो नारदो भगवत्प्रियो प्रेमो गदगदया वाच तानुवाचा कृतांजलि नारदोवाच धन्यो धन्यो अशम्यनुगृहीतोऽस्मि भवद्भिः करुणापरै अद्य मे भगवान् लब्धो सर्वपापहरो हरि श्रवणं सर्वधर्मेभ्यो परं मन्ये तपोधन वैकुण्ठस्थो यथा कृष्णो श्रवणादस्य लभ्यते श्रुतोवाच एवं ब्रुवत वै तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे परिभ्रमणा समायात सको योगेश्वरस्तदा तत्राययौ षोडश वार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञानिमहाब्धिचन्द्रमा कथावसाने निजलाभपूर्णः प्रेम्णा पठन् भागवतां शनैः शनैः दृष्ट्वा सदस्या परमोरुतेजसं सद्या समुत्थाय ददुर्महासनं प्रीत्या सुरसे समपूजयत सुखं स्थितो वदत सं शृणुतामलां गिरं शिशुकुवाच निगमो कल्पतरोर्गलतं फलं सुखमुखात्मतृदव संयुतं भवतो भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुक धर्मः प्रोजित केत्रवोत्र परमो निर्मसरणं सतां वेद्यमवसवमत्र वसवदं त्रापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरोध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तच्छृणात् श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद् वैष्णवानां घनं यस्मिन् पारमहंसमेव ममनो ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञानवैराग्यभक्तसहितं निष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छ्रवण प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमोचे नर स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नास्त्वयं रस अतः प्रभन्तो सद्भाग्या मामुञ्चत करहि चित सूतोवाच एवं ब्रुवाणे सत्यवादरायणौ मध्ये सभायां हरिराविरासीत् प्रह्लादवल्लोद्धव फाल्गुनादेवी व्रतः सुरासे तमपूजयच्चितान् दृष्ट्वा प्रसन्नो महदासने हरिं ते चक्रे कीर्तनमग्रतस्तदा भवो भवान्य कमलासनस्त्रु तत्रागमत कीर्तनदर्शनाय प्रह्लादस्तालधारी तरलगतितया चोद्दवाकांसधारी पीडाधारी स्वरर्षि स्वरकुशलतया रागकर्ता जुनोभूत् इंद्रो वादीन्मृदङ्गं जय जय शुक्रः कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भावभक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव ननर्तमध्ये त्र्यकमेव तत्र भक्त्यादिकानां तन्नटवसुतेजसाम् अलौकिकं की
तनमेतदीच्छो हरहि प्रसन्नो पिबचो ब्रवीत मत्तो वरं भाववृताद् विनोद्धो प्रीतो कथा कीर्तनतोऽस्मि साम्प्रतं श्रुत्वेति तद्वाक्यमति प्रसन्न प्रेमाद्रचित्ता हरमुचरेते नगाः गाथासु च सर्वभक्तये रेवेस्तया भाव्यमिति प्रयत्नात् मनोरथोऽयं परपूरणीय तथेत चोक्त्वान्तरधीयताच्युत ततो नमस्तचरणेषु नारद तथा सुखादीनप्रतापसाचो अतः प्रहष्टः परिनष्टमोह सर्वे ययोपीतकथामृतास्ते भक्तिः सुताभ्यां सहरचिता शास्त्रे स्वकीये पितदा सुखेन अतो हरिर्भागवतः ससविनात् चेतं समायात हि वैष्णवानां हरिद्रया दुःख ज्वरदाहितानां पिशाची परिमर्दितानां संसार सिद्धौ परिपातितानां क्षेमाय वैभागवतो प्रगरयति शौनकोवाच सुखेनोक्तं कदा रगे गोकर्णेन कदा पुनः सुरसये कदा ब्राह्मणे छेदि मे संशयं तिमं सूतवाच आकृष्णा निर्गमात् त्रिशतवर्षाधिकगते कलौ नवमीतो नवशे च कथारम्भं शुकोकर परीक्षिच्छ वणान्ते च कलौ वर्षशतद्वये शुद्धे शुचौ नवम्यां च धेनजो अकथयत् कथां तस्मादपि कलौ प्राप्ते त्रिशतवर्षगते सति ऊचो रोजेशते पक्षे नवम्यां ब्रह्मणा सुत एते समाख्यातं यद पृष्टोऽहं तया नघ कलौ भागवती वार्ता भ्रवरोगविनाशिनी कृष्णप्रियं सकलकल्मषनाशनं च मुक्ते कहेतुमिह भक्तिविलासकारी सन्तः कथानकमिदं पिबतादरेण लोके हि तीर्थपरशीलनसेवया किं सपुरुषमपि वीक्षपासहस्तं वदति यमाकिल तस्य कर्णमूले परिहर भगवती कथा सुमत्नान् प्रभुरोह मन्य नृणाम्नो वैष्णवानां सारे संसारे विषसंग कुलधियो क्षणार्धं क्षेमार्थं पिबतो सुखगाथा तुलसुधां किमर्थं व्यर्थं भूविजथः कुपिते कुदसित कथे परीक्षित साक्षी यक्षमणागत मुक्त्योक्ति कथने रस प्रवाह संस्थेन शीर्षके निरता कथा कंठे समद्यते न सा वैकुंठ प्रभुर्भवे इति च परम गुह्यं सर्वसिद्धांत सिद्धं सपदि निगदितं ते शास्त्रपुंजं विलोक्यो जगत सुख कथा तो निर्मलं नास्ति किंचित् पिबपा पर सुख हेतुर्द्वादश स्कंद सारं एतां यो नियततया शृणोति भक्त्या यश्चैनां कथयति शुद्ध वैष्णवाग्रे तौ सम्यग् विधि करणात् फलं लभेते याथा त्रयाणं हि भुवने किमप्यसाध्यम्। ओम सती पद्मपुराण उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्य श्रवण वेदी कथनम नाम षष्ठोध्याय पाठ श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम सती श्रीमद्भागवत महात्म्यम
संपूर्ण। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरि ओम तत्सत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंध प्रथमोध्याय। जन्माद्यशयतोन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वरात् तेने भ्रमरहिताय आदिकवये मुह्यन्त यतसूरय। तेजो वारिमिदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषो धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितकेत्रवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुसुवदं त्रापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्योरद्यवरोध्यते त्रिकतविः शुश्रूषुवे तत्क्षणात्। निगमो कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबतो भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। निमिषेत्रे ऋषयः सौनिकादय स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममाशतो तैकदा तु मुनयः प्रातरहुताग्नय सत्कृतं सूतमासीनौ प्रपचोरदमादरादृश्यौषुः तया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्रधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्नुत यान् वेद वेदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायण अन्ये च मुनया सूतं परावरविदो विदो वेत्थत्वं सौम्यं तत् सर्वं तस्तदनुग्रहात् ब्रूयो स्निग्धस्य शेषस्य गुरवो गुह्यमाप्युत तत्र तत्राञ्जसा आयुष्मन् भवता यदविनिश्चितं पुंसामेकां तथा श्रेयस्तन्नः संस्यतुमर्हसि प्रायेणाल्पायुष सभ्यो कलावस्मिन् युगे जन मंदः सुमन्दमतयो मंदभाग्या ह्युपद्रुत भूरेण भूरकर्माणि श्रोतव्यानि विभागस अथ साधोत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषय ब्रूहिण श्रद्दधानानां येनात्मा सम्प्रसीदति श्रुतजानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां प्रति देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षय तन्न शुश्रूषमाणानां मर्हस्यज्ञानुवर्णितुं यस्यावतारभूतानां क्षेम आपन्नः संसतिं घोरां यन्नाम विवशो गणन् तथा सद्यो विमोचेत यद बिभेति स्वयं भयं यत् पादसंश्रयाशूतो मुनयः प्रशमायन सद्या पुनन्तूप स्पृष्टो स्वरधुन्यापोऽनुसेवय को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेडयकर्मण शुद्धिकामो न शृणुयाद्यशः कलिमलापहं तस्य कर्माण्युदाराणि परगीतान् सूरभि ब्रूहिणा श्रद्दधानानां लीलया ददता कला थाख्या हि हरे धीमन् नवतारो कथाशुः लीला विदधता स्वेरो मीश्वरस्यात्ममायया वयं तु न वित्रप्याम उत्तमश्लोकविक्रमे यच्छणवतां सज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे कृतवान् किल वीर्याणि सह रामेण केशवो
अतिमर्त्यान् भगवान् गूढाकपटमानुष कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवै वयम् आसीनादीर्घसत्रेण कथायां संक्षिणा हरेः त्वं न सन्दर्श्यतो धात्र दोस्तरं निस्ततेषतां कलिं सत्त्वहरं पुंसां कर्णधार इमाणवम् ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वां काष्ठामदनोपेते धर्माकं शरणं गतः। ओ तस्य श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नवमोपाख्याने प्रथमोऽध्याय पाठफलो श्रीकृष्णः चरणारविन्दम् अर्पणमस्तु। बोलो श्री गोवर्धननाथ की जय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले श्री भागवत महापुराण की जय। महारानी की जय। महाराज की जय। श्री गोवर्धननाथ की जय। जय श्री कृष्ण। आप सभी वैष्णव जनन को, सभी मित्र बंधुओं को जय श्री कृष्ण। आज हम यहाँ मनसा देवी मंदिर में जब ठाकुर श्री कृष्ण को ब्रह्म हत्या लगी तो वहाँ के निराकरण के लिए ठाकुर जी ने अपने मन से मानसी गंगा प्रकट करी। तभी से यहाँ मनसा देवी विराजमान है। आज हमें यहाँ पाठ करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आपने पाठ श्रवण किया। आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ठाकुर श्री गोवर्धननाथ जी के श्रीमद् भागवत जी के मूल पाठ के श्रवण करने से आविर्भूत होते रहें। जय श्री कृष्ण। जय गणराज।